Nobody actually prepares you for college life. They tell you it's the best time of your life. But तुम्हें कोई ये नहीं बताता about the confusion, the pressure and the loneliness that hits at night. If you are in first year or even second, please listen till the end. It would be very helpful. So, when you were in first year of college, मैं अपना बताती हूँ. When I was in first year of college, my thinking was marks are everything. I was running around, CGP and marks and assignments. You complete your assignments, you go to home, and you then revise what was taught in the class, and so and so. We live in that school wala dilemma that college is all about that. But now, today, when I'm in second year, I have got to realize many things. The first and the very most important thing is marks are not everything. Let me be very clear with you once again. Marks are not everything. Many people would say कि नहीं, when you go to higher education, like when you go to IIMs and when you go to IITs, marks do matter. And yes, that's my assumption, marks are not everything, because I'm sharing my experience. सबसे पहले क्या होता था, when we used to give our presentations, ठीक है, we used to ask ourselves, am I doing enough? Am I giving my 110%? What if people judge me, or what if people laugh at me, or what if I forget what have I learned? ठीक है. तो जब ये वाला फेज भी बीता, उसके बाद वो टाइम था जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि स्टॉप रनिंग बिहाइंड मार्क्स. What matters in the college is skill, confidence and exposure. I repeat, number 1 skill, number 2 confidence and number 3 exposure. बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नहीं, स्किल, कॉन्फिडेंस, एक्सपोजर, ये सब तो ठीक है, ये सेकेंडरी थिंग्स है, बट प्राइमरी थिंग मार्क्स ही होते हैं. आई एम अ मैनेजमेंट स्टूडेंट एंड इन मैनेजमेंट दीज 3 थिंग्स आर नॉट द सेकेंडरी, दीज आर द प्राइमरी थिंग्स. When you enter college, you realize that someone is doing internship and someone is, running behind there. For example, if we take about CAT, someone is running behind CAT since first year, someone is preparing for their interviews and everything, okay? So you realize, am I doing enough? Or am I fit to be in this college? And you start questioning your own self. That am I best? Or am I the best person to fit over here? And that is the day when you realize कि let's forget assignments and everything and start building up on yourself. सबसे पहली चीज़ क्या होती है? सबसे पहली चीज़ is to understand yourself and what do you want in life. And confidence is the key to success. I repeat, confidence is the key to success. When you know how to talk to people, how to convince them, how to मतलब कि जब तुम्हें आता है कि लोगों के साथ कैसे डील करना है ना, that is the day you'll realize that oh my god, I have मैंने काफ़ी सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया. Confidence is the key to success. Instagram shows college life is fun, freedom, concerts. When I was in 12th, I was like very sure कि मेरे को बाहर ही पढ़ने जाना है, because I used to see कि उस कॉलेज में ये कॉन्सर्ट हो रहा है, उस कॉलेज में ये फेस्ट हो रहा है, उस कॉलेज में वो हो रहा है. बट जब तुम कॉलेज आते हो ना, यू रियलाइज कि Instagram didn't told about us the pressure to be alone, the pressure of stage fear and the loneliness that hits at night. And very important, the fear of the future. क्योंकि तुम्हें लगता है कि your parents are spending too much. Will I or will us be be able to give the return? हम उतना वापस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? That is the time when college life hurts the most and hits the most. तब लगता है कि leave concerts, leave everything, and you just start questioning yourself again. The truth is, college is hard for many of us. And I am saying this because even I have experienced this. Pehle marks, but now it's just that ki it's not about marks. Yes, marks do matter, but like just 10-15%, I guess. College is a time to try out things. Our colleges, clubs like finance club, marketing club, and environment club, and many other clubs to try on. The colleges to it's the time to try out things, to understand what do you need, to question yourself कि
मेरा इंटरेस्ट कहाँ पे है? द टाइम टू स्पीक व्हेन यू फील स्कैर्ड, टू फेल अर्ली सो दैट यू कैन लर्न अर्ली. जब तक तुम गिरोगी नहीं तब तक तुम उठोगी नहीं. वंस आई हैड अ थॉट कि आई वुड नेवर डू पेंटिंग इन माई लाइफ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं इतनी आर्टिस्टिक तो नहीं हूँ कि मैं कभी ड्रॉ और पेंट कर पाऊँगी. बट एक दिन मैंने ऐसे ट्राई किया एंड इवेंचुअली मेरे से नहीं हुआ पेंट, बिकॉज आई नेवर थॉट दैट आई वुड पेंट. बट उस टाइम मेरे को एक चीज़ काफ़ी हिट की और मैंने एक चीज़ काफ़ी रियलाइज़ की कि मैंने तो पहले ही सोचा था कि पेंटिंग मुझसे नहीं होगी, बट मैंने एक बार ट्राई करके देख लिया और मैंने अपने आप को प्रूव कर लिया कि ये मेरे बस की बात नहीं है. इसका कहने का ये मतलब था कि अगर तुमसे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि तुम वैसे भी करना नहीं चाहते थे ना. बट एक बार ट्राई देके कंफर्म तो हो गया ना कि तुम नहीं कर सकते. आई मीन अगर तुमने ट्राई किया और हो गया, इट्स वेल एंड गुड. अगर नहीं हुआ तो तुम वैसे भी करना नहीं चाहते थे ना वो. यू डोंट हैव टू फिगर आउट योर होल लाइफ इन फर्स्ट ईयर कि मुझे सेकेंड ईयर में ये करना है, हर सेम में ये करना है, इतनी CGP, इतने मार्क्स. नो, दैट्स नॉट लाइक दैट. You just need to start exploring, start learning about yourself, start learning कि आज के marketing trends क्या हैं. Not just about a management student, like बहुत सारी चीज़ें हैं to learn and explore. Try out every possible thing in your college life. If you're feeling lost right now, let me tell you something. You are not behind. You are just learning. You are just exploring. And very importantly, you are at the beginning. So stop comparing yourself. उसने इतना कर लिया, मैंने इतना नहीं किया. उसने वो कर लिया, मैंने वो नहीं किया. Don't compare yourself with anyone. Everybody has their own space. Everybody has their own way of learning. Everybody has their own mental capacity. और हर बंदे की अपनी लाइफ होती है, हर बंदे की अपनी चीज़ें होती हैं. So stop comparing yourself. You're not behind, you're just learning, and you are at the beginning of the process. So just trust the process once. I am not sharing this video to make you realize that you are too late to start anything or try out anything. I just want you to understand what you want in life and to get out of that myth that marks are not everything. एंड थर्ड कि तुम इतना ज़्यादा डिले ना कर दो कि तुम्हें लगे कि ओ शिट, आई मिस्ड आउट ऑन एवरीथिंग, आई डिडंट ट्राई आउट एनीथिंग. इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग. दिस वीडियो हेल्प्ड यू टू फील अ लिटिल लेस confused and to know about yourself and to know what do you want in life and to completely understand your life and what you want. I'm glad you're here.